पेट में थोड़ा सा भी चूहा कूद रहा है, तब से पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, अब कुछ टेस्टी खाने का मन कर रहा है। पर जस्ट बिफोर हम लोग को अभी टेस्टी खाने का मन करे, कुछ इस तरह का खाने का, और हम खाने पे कुछ पाउंस करें लाइक हिम or maybe like him, why don't we just imagine, just wonder that the food, how does the body utilize the food? हम सबको पता है हमारा एनर्जी करेंसी एटीपी होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हमारे बिल्डिंग ब्लॉक के लिए हमें प्रोटीन चाहिए होता है, बट डू वी ईट प्रोटीन और डू वी ईट एटीपी? नो। हम रोटी, सब्जी, तंदूरी, बटर चिकन, हम यही खाते हैं। सो खाना एटीपी में बदलता कैसे है? Isn't it something really interesting? Something we really need to know and imagine and think? Come, let's get on to it. So food कौन सा path follow करता है? हम सबको पता है फूड डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम को डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों कहा जाता है? डेफिनेटली बिकॉज इट डज डाइजेशन, दैट्स व्हाई इट इज डाइजेस्टिव। व्हाई इट इज अ सिस्टम? System means it consists of many organs compiling to make a system. It makes a single unit, many organs, buccal cavity, liver, stomach, pancreas, large intestine, small intestine. These all are different organs, but they perform digestion as a compact unit. Digestion, in its definition, would be a process by which macromolecules are turned into absorbable micromolecules which can be used further by the body. Or in other words, हम खाते रोटी हैं, बनता एटीपी है। Where does it all start? Digestion starts from mouth itself. हम जब रोटी खाते हैं या ब्रेड खाते हैं, हमारे मुंह में एक स्वीट फीलिंग आता है, एक हल्का सा मीठा मीठा फीलिंग आता है। दैट्स बिकॉज द सलाइवरी अमाइलेज starts digesting the starch, breaking it into glucose, जो हमें मीठा फील होता है। By that we know that chemical digestion starts in our mouth itself, and also the physical digestion, because जो हमारे टीथ हैं, हमारा टीथ खाने को च्यू करके छोटे छोटे पार्टिकल्स में बदलता है। छोटे छोटे पार्टिकल्स में बदलने के दो रीजंस हैं। फर्स्ट रीजन इज that the food becomes easy to gulp and to go down and forms a bolus. And the second, when we break the food into small particles, then the enzymatic activity can be enhanced on the food because खाने के particles का surface area बढ़ चुका होता है। So अब हम बात करते हैं हमारे टीथ के बारे में। नाउ ह्यूमन टीथ इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्यू वर्ड्स, लाइक हम ह्यूमन टीथ के साथ कुछ फ्यू वर्ड्स को हम एसोशिएट कर सकते हैं। फर्स्ट इज डाइफायोडोंट। डाइफायोडोंट मतलब हमारे दांत दो बार आते हैं। वी हैव वन मिल्क टीथ एंड वन सेट ऑफ परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ होते 20, परमानेंट टीथ होते 32। कहते हैं ना 32 ही तोड़ दूंगा, 32 ही मतलब 32 टीथ हमारे दांत। So diaphyodont is because we have deciduous teeth. The milk teeth breaks, goes down, and the new teeth comes out at the age of around 10 to 15. Next is heterodont. हमारे दांत के शेप अलग अलग होते हैं specific to their function. Thecodont. The teeth are fixed into sockets in our jaw. And bunodont. Our teeth are blunt and covered with cusp. So the characteristics of human teeth are, they are diaphyodont, heterodont, thecodont and bunodont. Now, what are the shapes of different teeth? The teeth are incisors, canine, premolar and molar. Incisor ये बेसिकली चीज़ों को काटने के लिए बना हुआ है। इसका जो फ्रंट पार्ट है ये एक शार्प ब्लेड जैसा है। वहीं पे कैनाइन और द टीयरिंग टीथ
ये एक भाले जैसा होता है, लाइक अ स्पेयर। जो प्रीमोलर्स होते हैं, इनका और मोलर्स का, इन दोनों का मेन काम करीबन करीबन सेम ही होता है। दे आर फॉर च्यूइंग, दे चू द फूड, क्योंकि हम मेन च्यू हम लोग पीछे के दांतों से करते हैं। So our dental formula, what is a dental formula? With the help of numbers, we represent the number of teeth in one half side of the mouth. It is called the dental formula. Adults have a set of 32 teeth, जैसे मैंने बोला 32 ही, and the dental formula is 2 1 2 3. 2 incisors, 1 canine, 2 premolars, 3 molars. ये दांत के ऊपर हिस्से का पार्ट है, और नीचे वाला 2 1 2 3 इज रिप्रेजेंट्स दिस। अगर आप बोर्ड्स के स्टूडेंट्स हो तो आप जब एग्जाम में लिखो तो देन डेफिनेटली मेंशन दैट इंसीजर 2, कैनाइन 1, प्रीमोलर 2, मोलर्स 3, देन राइट दिस रिप्रेजेंटेशन, एल्सवाइज मार्क्स कट सकते हैं। Whereas this is the permanent tooth set, but the milk tooth set is different. It is 2102. कई लोग 212 लिखते हैं, but it is wrong. Technically, it's wrong. 2102. 2 incisor, 1 canine, 0 premolars, 2 molars. जहाँ पे बच्चों का यानी छोटे बच्चों का प्रीमोलर्स होता है, वहाँ पे हमारे मोलर्स उगते हैं। प्रीमोलर्स टूट के मोलर्स उगते हैं, सॉरी, जहाँ पे उनका मोलर्स होता है वो मोलर्स टूट के हमारे प्री मोलर्स उगते हैं, और उसके पीछे मोलर्स उगते हैं। ये जो 2 मोलर्स है इनका, ये टूट के 2 प्री मोलर्स निकलेगा, और उसके पीछे 3 मोलर्स निकलेगा। Now let's study a bit about the structure of our teeth. Now teeth can be divided into 3 parts: the crown, the neck, the root. Crown is covered with something called enamel. Enamel is secreted by a cell called ameloblast. The dentine forms the major part of the crown and the root and the neck too. And dentine is secreted by a cell called odontoblast. ये है pulp cavity जहाँ से blood vessels जाते हैं when we have sensitivity in our tooth. Actually this dentine, this enamel, it gets eroded, and the sensitivity, that sensation can reach this pulp cavity, which hurts. It hurts a lot. And this is the bony socket जहाँ पे teeth attached. That's why our teeth is called thecodont. Now the other organ which is helpful in digestion is tongue. Tongue is a muscular organ. It is voluntary in nature. It can be controlled voluntarily. It contains many glands. Now, let me be specific. It doesn't exactly contains glands, but the glands in the buccal cavity open around or near the tongue, which secretes the saliva. Tongue has the taste buds, which helps in sensation. Daily 1.5 liter saliva is produced, and the pH of saliva is around 6.7. It is slightly acidic, not too acidic, not too basic, not basic at all. Chloride anion is responsible, that is Cl minus, is very very important for the activation of salivary amylase present in the ptyalin. Ptyalin means the saliva. The tongue. Now let's talk about the tongue exactly. If you lift your tongue right now, तुमको फील होगा कि टंग एक मसल फोल्ड के साथ अटैच्ड है हमारे बकल कैविटी के फ्लोर के साथ, एंड दिस इज कॉल्ड फर्न्यूलम. द फर्न्यूलम इज अ मसल फ्लैप which attaches the tongue to the floor of buccal cavity. The sulcus terminalis divides the tongue into anterior and posterior part. Anterior part है oral part जो हमारे मुंह में दिखता है, posterior part नहीं दिखता है, ये गले के अंदर है. The tongue actually posteriorly is attached to the hyoid bone.
hyoid bone is a special bone in the sense hyoid bone कभी skeleton के साथ attached नहीं है. It's the only bone which is only attached with muscles and it has no connection with the skeleton itself. वरना हर एक bone दूसरे बोन्स के साथ अटैच्ड रहता है. इसलिए कई बार अगर आप मेडिकल कॉलेज में जाओगे या फिर डेंटल कॉलेज में जाओगे, वहाँ पे स्केलेटन्स में हमेशा हाइड बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता until unless उसको किसी वे से आर्टिकुलेट करवाया गया हो. Now let's talk about the salivary glands. We have basically 3 salivary glands: parotid gland, sublingual gland and submandibular gland. The sublingual gland opens with the duct of Rivinus or Rivinus duct. Submandibular gland opens with Wharton duct and parotid gland opens with Stenson's duct. Duct के नाम उतने important नहीं है नीट या बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए, but still अगर आपको लगता है थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जानना है, so do note it. So thank you, and to know the rest of the journey of food, stay tuned and do subscribe to my channel. Goodbye.